Hi guys, you're at filmmaker. I'm Saad Sheikh and this is my favorite 5. So when I was asked to talk about my top 5 films, मैं चाह रहा था कि हम अपनी पुरानी क्लासिकल्स को साइड पर रखें और मैं बात करूं अपनी फेवरेट 5 फिल्म्स की जो इस रीसेंट हिस्ट्री में मुझे मूव किया है, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूं या मैं उस जैसा काम करना चाहता हूं, बी इट इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, बी इट इन टर्म्स ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक of the film, or be it definitely inspired by the performances and the direction of the film. तो उसी एक फिल्म की बात करेंगे. One of these is Revolutionary Road. We can be happy here. I can make you happy here. We're gonna be okay. It's directed by Sam Mendes. The music is by Thomas Newman. Before we move forward, ये film based है Richard Yates की किताब पे, which also happens to be my favorite book. Now we talk about adaptation from the books. काफ़ी कम ऐसा होता है कि हमारी film justice करती है किताब के साथ, but this movie hands down talks about all the minute details spoken about in the book. Nothing's permanent, right? Sam Mendes' direction and bringing back Kate Winslet and Leonardo DiCaprio together is a treat to watch on screen, and the performances are something that will definitely move all of you. And the cherry on top is Thomas Newman's music, जिसने एक emotion को characters के screen पे project किया है. He's the music director for Finding Nemo, Pride and Prejudice, WALL-E, and a lot of great films. Happens to be my favorite music director and makes this film one of my top 5s. Number 4 है Across the Universe. Now, Across the Universe की जो डायरेक्टर जूली टेमोर है, इसने लायन किंग इंट्रोड्यूस किया था ब्रॉडवे पे. Now, being a performing artist, I think I relate to the performing tactics जो इसने स्क्रीन पे यूज़ किए हैं. पूरी फिल्म एक स्टेज थिएट्रिकल डायनामिक्स पे आपको चलती हुई नज़र आती है. और अगर आपको बीटल्स पसंद है तो आपको नज़र आएगा कि बीटल्स का हर मशहूर गाने का सबसे बेहतरीन कवर इस फिल्म के अंदर यूज्ड है, based on a narrative that is created fictionally by Julie Taymor. It talks about the US hippie culture in the 70s. It talks about the Vietnam War. All occupied the Beatles. It is the film to watch out for. This makes it number 4. Mera number 3 hai P.S. I Love You. There's absolutely no way I'm doing this. Yes, you are. No, I'm not. Oh, yes, you are. P.S. I love you. Now I know कि ये काफ़ी cheesy फिल्म का नाम है और आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं कहाँ अपनी टॉप 5 फिल्म्स में डाल रहा हूँ, पर P.S. I Love You का अगर आप स्क्रीन प्ले देखिए और गौर से डायलॉग सुनिए, यू विल नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांसेस रिटन इन द रीसेंट टाइम्स. ये भी एक किताब पे बेस्ड है. सिसिलिया हर्न एक आयरिश ऑथर हैं जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, लेकिन बहुत बुरी किताब थी. आई हैव रेड द होल बुक. दिस फिल्म, हैविंग सेड दैट, रिचर्ड लाग्रवेनीस ने जिस तरह अडेप्ट की है और जॉन पावल ने जो म्यूजिक दिया है, खुद आयरलैंड में जाके पूरा उन्होंने म्यूजिक डिज़ाइन किया, it makes it the finest. Are you Holly Kennedy? If I am, will you sing at me? Yes. No, I'm not. Oh, I could get reported. By who? The Leprechaun Union? Character development जो Jerry की और Holly की, played by Hilary Swank and of course the great Gerard Butler, is amazing. So you will know why this is top 3 if you watch it again in recent times. P.S. I Love You. Number 2 से पहले हम आपको एक बड़ा सा disclaimer देंगे कि this is the ultimate Hollywood cliche of films. Titanic. Titanic number 2 पे इसलिए आती है because of the grandeur of the film and of course James Cameron ने जो direction दिया. Now before this I watched it as a kid. मुझे नहीं पता था Leonardo DiCaprio कौन है और Kate Winslet कौन है, but the way they did their performances, the way Kate Winslet fits in all the Audrey Hepburn costumes in the first half of the film, the way the Celine Dion music plays in the background in most parts, and James Horner's music, may he rest in peace, is why Titanic becomes this great mega ultimate film that will live forever. And we all have that argument that was there space on the plank. अगर आप वो सीन भी दोबारा देखेंगे आपको पता चलेगा कि plank पे जगह नहीं थी. Titanic is the second best film of top 5. Number 1 happens to be a film जो मैंने अपनी teenage में देखी थी. I was transitioning into adulthood and so was this character of Christopher McCandless in this amazing movie Into the Wild.
Directed by Sean Penn, who also happens to be a phenomenal actor, this film is based on Christopher McCandless's crazy life story. Why would I want a new car? क्रिस्टोफर मैकेंडल्स की पर्सनल डायरी पे एक किताब बेस्ड है, जिस किताब पे ये फिल्म बेस्ड है. अब इस फिल्म का एक एक डायलॉग एक इंस्पिरेशनल कोटेशन बन गई है जो टम्बलर पे पोस्टेड थी, जिसकी वजह से ये फिल्म मुझे मिली. How important it is in life not necessarily to be strong, but to feel strong. The dialogues, the script, the performances by Emil Hirsch, everything adds so much layer to it, but what really adds soul to this film is Eddie Vedder's music. एक alap, एक stroke adds so much layer to the mountains, the nature and everything. और इसका जो last shot है, अगर आप वो film देखेंगे दोबारा, it's still a technical mystery how they did that shot, but when the character is in the bus and the way the camera goes up, it's a technical mystery. This film is a must watch. It's underrated, but I urge you to watch Into the Wild. These were my favorite 5 and we would love to know yours. Please mention in the comment below. For more film related content, subscribe to Filmmaker.